Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashoda Nandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtotara Shata Sri Srimad. His Divine Grace Abhay Charan Aravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtotara Shata Sri Srimad. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Navadvip Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Yamuna Mai Ki Jai. Tulasi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padai Krishna Prishta. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha.
Sri Chaitanya Manobhishthang Sthapitang Yena Bhutale Swayam Rupakada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Taparakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghuna Thanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitangscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutade Srimate Bhakti Vikasa Swamin Nityanamane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutade Srimate Bhakti Vedanta Swamin Nityanamane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So today I've been asked to speak a little bit about Srila Prabhupada in anticipation of his disappearance day, which is coming up on Tuesday. तो आज हम श्रीला प्रभुपाद के विषय में चर्चा करेंगे और जो आने वाला ट्यूसडे है उस दिन श्रीला प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस है. All of the members of this Krishna consciousness movement should be very familiar with Srila Prabhupada's life and teachings. हम सब जो इस कृष्ण भावना अमृत संघ में हैं, हम सब श्रीला प्रभुपाद और उनकी शिक्षाओं के बारे में शिक्षाओं से अवगत हैं. So probably many of the things that I'll say today is things that everyone already knows, but as Srila Prabhupada writes in his first canto of Bhagavatam, that glorifying the devotees of the Lord is more important than glorifying the Lord himself, so we will do like that. तो आज जो मैं चीज़ें कहूँगा उसमें से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप सबको पता हैं, लेकिन जैसे श्रीला प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में लिखते हैं कि भक्त का गुणगान करना भगवान के गुणगान करने से भी ज़्यादा प्रभावशाली है. And factually speaking, just like it is said in Sri Chaitanya Charitamrita, that even the most learned scholar cannot even begin to understand the activities of a pure devotee of the Lord. जैसा हम देखते हैं कि कोई बहुत विद्वान व्यक्ति भी भगवान की शुद्ध भक्ति क्रियाकलापों को नहीं समझता. So there is an unlimited amount of things that we can say in glorification of Srila Prabhupada, because he himself has unlimited good qualities because of his closeness with the unlimited Supreme Personality of Godhead, Krishna. तो श्रीला प्रभुपाद के विषय में हम अनगिनत चीजें कह सकते हैं क्योंकि उनमें अनगिनत गुण हैं, क्योंकि वह जो अनगिनत भगवान हैं उनसे संपर्क में. Seemingly, Srila Prabhupada is very limited. He had a limited amount of time that he spent in this world. तो देखने से ऐसा लग सकता है कि श्रीला प्रभुपाद की बहुत सारी सीमितताएं हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ एक सीमित समय था इस जगत में. He wrote a limited amount of books and gave a limited amount of lectures and conversations, etc. उन्हें सीमित मात्रा में पुस्तकें दी, सीमित मात्रा में प्रवचन और जो उनकी चर्चाएं थी वो थी. But because the Srila Prabhupada's life and teachings are completely of the spiritual nature, they are anandam buddhi vardhanam, the ever expanding ocean of transcendental bliss. क्योंकि जो श्रीला प्रभुपाद के विषय हैं वह आध्यात्मिक विषय हैं, इसलिए वह आनंदाम बुद्धि वर्धनम, वह जो आनंद का वर्धन करने वाले. So therefore we can chant about, remember, hear about all of the activities and teachings of Srila Prabhupada again and again, and we can derive ever fresh and ever new transcendental knowledge and inspiration from these things. तो हम श्रीला प्रभुपाद के विषय में सुन सकते हैं और बता सकते हैं, और हम जितनी बार भी बताते हैं हमें नया आध्यात्मिक ज्ञान उससे मिलता है. As I was saying, Srila Prabhupada had a very limited amount of time in this world to complete the mission which he came to this world to complete. तो हम देखते हैं कि जैसा मैंने बताया था, श्रीला प्रभुपाद के पास एक सीमित समय था जब वो इस जगत में आए, जो उन्होंने मिशन चालू किया उसको पूर्ण करने के लिए. And specifically in the 11 years
towards the end of Srila Prabhupada's manifest pastimes in this world, devotees, there's a tremendous amount of information about what was Srila Prabhupada doing, where was he going, what was his activities. और विशेषतः 11वें साल में जब श्रीला प्रभुपाद अपनी अंतिम लीला में थे तो बहुत सारी चीजें उस विषय में हैं जो भक्त लोग बताते हैं श्रीला प्रभुपाद के विषय में। 11वां साल में 11 साल And we're very fortunate to have so much information about such an extraordinary acharya. There's never been any instance in the history of this world where we have so much recorded information about an acharya. तो हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि हमारे पास एक विशेष जो आचार्य हैं उनके बारे में इतना सारा ज्ञान उपलब्ध है, क्योंकि हम देखते हैं कि इतिहास में किन्हीं भी आचार्य के बारे में इतना सारा जो ज्ञान है वह उपलब्ध नहीं है। And from a combination of audio recordings, video recordings, diaries, etc., I can't think of any other guru in the past or in the present who there's just so much immense writings and information about that person. प्रभुपाद के हम देखते हैं जो उनके प्रवचन हैं या जो उनके अलग-अलग वीडियोस हैं उनसे हम देख सकते हैं कि मतलब मैं नहीं जानता ऐसा कि इतिहास में कोई ऐसे आचार्य हुए हैं जिनके बारे में इतना सारा चीजें उपलब्ध है। And because of the nature of this information, which is recorded, there are many things about Srila Prabhupada which are just undeniable, like where he was born, where did he come in America, etc. When is the date that he founded ISKCON? These are historical facts that everyone agrees upon. तो हम देखते हैं कि उनके जीवन में कुछ ऐसी चीजें थी जो लोग उसको नहीं कह सकते कि वो गलत है, जैसे श्रीला प्रभुपाद का जन्म होना और उनका अमेरिका आना और उनका जो संस्था है उसकी स्थापना करना। But we also see that even though Srila Prabhupada's teachings are also recorded in the same way, very historically factual, there are many different understandings of Srila Prabhupada's teachings, his mood in his teachings, his purpose of his teachings, etc. हम देखते हैं कि उसी तरीके से श्रीला प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं वह भी कथ्य के रूप में प्रकाशित हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों के अलग-अलग मत हैं कि श्रीला प्रभुपाद का क्या इच्छा थी, उनका क्या मूड था। So to speak about Srila Prabhupada's manifest pastimes and everything, these are all very nice, and devotees should do like this, but we should also make a very serious endeavor to try to understand Srila Prabhupada, his life and his teachings. तो श्रीला प्रभुपाद की प्राकृत लीला के बारे में जानना बहुत अच्छा है, बहुत आनंद देने वाला है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि जो श्रीला प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं हम उनका भी पालन करें। We find in today's Krishna conscious society, there are initiated devotees that have hardly even read any of Srila Prabhupada's books. They don't know some of the most basic teachings of Srila Prabhupada, like that we shouldn't eat grains cooked by non-devotees, basic things like this. We find that this is very common in today's society. हम देखते हैं कि ISKCON के अंतर्गत भी जो दीक्षित भक्त हैं कहीं पे उन्हें यह ज्ञात नहीं है, जो बहुत ही साधारण से नियम हैं उनका प्रचार कर सकते हैं, वह यह है कि हम पहले उनकी शिक्षाओं को समझें और उन्हें अपने जीवन में उतारें और फिर हम उसका प्रचार करें। And if devotees are engaged in this type of glorification of Srila Prabhupada, then the authentic Krishna consciousness movement will be spread in this world and will become very strong. तो अगर भक्त लोग इस तरीके से श्रीला प्रभुपाद का गुणगान करने में लगे हैं, तो जो प्रामाणिक कृष्ण भावनामृत संघ उसकी स्थापना होगी, श्रीला प्रभुपाद का गुणगान पूरे विश्व में होगा। Of course, we can't expect that everyone can do such extraordinary things as what Srila Prabhupada did, but as Prabhupada writes in one purport in the first canto, in this pastime of Dhritarashtra leaving home, he writes that actually any devotee can be
empowered to the same level as the Lord himself if he's simply following in this Guru Parampara. हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने जो कार्यकलाप किए वह अकल्पनीय है, लेकिन श्रील प्रभुपाद भागवतम के प्रथम स्कंद में एक तात्पर्य में बता रहे हैं, जहाँ धृतराष्ट्र का वर्णन है, जब धृतराष्ट्र जंगल जाते हैं तो वहाँ वर्णन है कि जो एक शुद्ध भक्त है वह प्योर डिवोटी है. He can become empowered to all as much as the Lord himself. He can have the same amount of power as the Lord himself. जो शुद्ध भक्त हैं वह भगवान के समान ही शक्ति है उसे प्रदर्शित कर सकते हैं. And this should actually be the purpose of our glorification of Srila Prabhupada, is that we want to please Srila Prabhupada, and by pleasing Srila Prabhupada, we please Krishna, and by pleasing Krishna, we get the mercy of Krishna by which we can become capable preachers of this Krishna consciousness movement. तो यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए श्रील प्रभुपाद का गुणगान करने का, कि हम श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कार्य कर पाएं, क्योंकि हम प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो हम कृष्ण को भी प्रसन्न करेंगे, और जब कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रामाणिक प्रचारक बन पाएंगे. Of course, we're singing every single morning, Yasya prasadat bhagavat prasado, Yasya prasadan nagati kutopi, Yasya prasadan. That by pleasing the spiritual master, naturally the Supreme Lord is also pleased. हम जैसा सुबह सुबह मंगल आरती में गाते हैं कि गुरु को प्रसन्न करने से जो भगवान है वह भी प्रसन्न हो जाते हैं. And Srila Prabhupada writes in his purport on the very famous verse, Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaya. He writes that the secret to spiritual life, the secret to advancement in spiritual life, is the satisfaction of the self-realized spiritual master. तो श्रील प्रभुपाद अपने श्रीमद् भगवद गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि गुरु को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का जो राज है वह यह है कि जो गुरु हैं उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाए. So devotees should have a very strong desire to become pure devotees, and they should have a very strong desire to participate in this Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement, preaching this message. So जो भक्त हैं उनकी बहुत ही प्रगाढ़ इच्छा होनी चाहिए शुद्ध भक्ति करने की, और जो श्रील प्रभुपाद जो श्री चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन है उसमें भाग लेने की. And we should very clearly understand that our only hope of becoming pure devotees and our only hope of becoming capable preachers in this movement is by the mercy of Srila Prabhupada and his faithful followers. और हमें यह समझना चाहिए कि हमारे इस जीवन में शुद्ध भक्त बनने की और इसका प्रचार करने की उम्मीद तभी है जब हम श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों के आदेशों का पालन करेंगे. So for this reason, we should always be engaged in glorifying Srila Prabhupada by speaking about him and by serving him. इसलिए हमें हमेशा व्यस्त रहना चाहिए प्रभुपाद का गुणगान करने में, उनकी सेवा करके. His Holiness Bhakti Vikas Maharaj writes in this book, Jai Srila Prabhupada, that actually every activity that a devotee is doing in this Krishna consciousness movement should be as a glorification of Srila Prabhupada. परम पूज्य भक्त विकास स्वामी महाराज अपनी पुस्तक जय श्रील प्रभुपाद में वर्णन करते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जो भी व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह इसलिए रहना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद का गुणगान. He writes that every arati performed should be in remembrance and glorification of Srila Prabhupada. Every puri which is fried, every book which is distributed, etc., no matter what is the service, it should be done with this Prabhupada consciousness. वहाँ बताते हैं कि जो भी आरती की जा रही है वह प्रभुपाद का स्मरण करके होनी चाहिए. जो भी पूड़ी हम फ्राई कर रहे हैं वो श्रील प्रभुपाद का स्मरण करके हो. जो भी पुस्तकें हम वितरित कर रहे हैं वह भी प्रभुपाद का स्मरण करके हो. उसके अलावा जो भी क्रियाकलाप हैं सब जो है प्रभुपाद चेतना में रह के किया जाना चाहिए. And if we are not glorifying Srila Prabhupada with 100% of our words, activities, body, etc., then that means that we haven't actually understood who is Srila Prabhupada. तो अगर हम 100% अपनी क्रियाओं से अपने शब्दों से श्रील प्रभुपाद का गुणगान नहीं कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम पूर्णतः नहीं जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद हैं कौन. Because if we actually understand Srila Prabhupada
then we would have unlimited inspiration to go and spread this knowledge of Srila Prabhupada to everyone in this world. क्योंकि अगर हम श्रील प्रभुपाद के बारे में जानेंगे तो हमें जो है मतलब अनगिनत रूप से प्रेरणा मिलेगी कि हम श्रील प्रभुपाद का गुणगान करें और अलग अलग जगह जाके लोगों को उसके बारे में बताएं. So in this way, Srila Prabhupada is so great. Srila Prabhupada is very great. श्रील प्रभुपाद जो है वो बहुत महान है. And even to worldly people, Srila Prabhupada's activities were very impressive. तो जब हम देखते हैं जो भौतिक जगत के लोग हैं उनके लिए भी श्रील प्रभुपाद की क्रियाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावकारी थी. The amount of literatures which he published, the amount that he traveled, the amount of money which his society was producing, collecting, the great temples and buildings, all of these things were extremely impressive even to the most materialistic men. जो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, जो श्रील प्रभुपाद अलग अलग जगह भ्रमण कर रहे थे, जो उन्होंने मंदिरों की स्थापना करी, जो लक्ष्मी भक्त लोग एकत्रित कर रहे थे, वो भौतिकतावादी लोगों के लिए भी बहुत ही प्रभावकारी थे. Now this doesn't necessarily mean that in order to be a pure devotee and in order to serve Krishna, we have to do very big and amazing, apparently worldly things. इसका अर्थ यह नहीं है कि जो भगवान है उनकी सेवा करने के लिए हम लोगों को इस जगत में बहुत ही बड़ी-बड़ी चीजें करने की आवश्यकता है. We see in cases like Srila Gorakishore Das Babaji Maharaj, he went his whole life without doing a single thing which would be even remotely impressive to a very materialistic person, other than maybe the fact that he was so renounced. देखते हैं कि श्रीला गौरकिशोर दास बाबाजी महाराज वो ऐसी कोई भी विषय के बारे में कुछ नहीं जानते थे जो एक भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए बहुत ही आकर्षक होगा, लेकिन वह जो है पूरे जीवन में वैरागी की तरह रहे. But whenever these types of pure devotees want to preach the message of Chaitanya Mahaprabhu, great devotees like Srila Prabhupada, they employ these techniques which are completely impressive to even worldly people in order to attract them to the service of Krishna. लेकिन जब प्रचार कार्य करना होता है तो हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त हम ऐसी चीजें प्रस्तुत करते हैं जो भौतिकतावादी लोगों को भी बहुत ही आकर्षित लगती हैं. And this was undeniable, and this is the reason why many of Prabhupada's original followers became very attracted to this movement. तो यह तथ्य है और हम देखते हैं इसी कारण से जो श्रील प्रभुपाद के शुरुआती समय में शिष्य थे वह बहुत ही आकर्षित हुए प्रभुपाद से. Many of his early disciples, they remember that simply by seeing Prabhupada or simply by just seeing Prabhupada one time, an unforgettable experience happened in their life. बहुत सारे श्रील प्रभुपाद के जो शुरू के समय में शिष्य बने थे वह बताते हैं कि सिर्फ श्रील प्रभुपाद को देखने मात्र से उन्हें एक ऐसा तजुर्बा मिला, ऐसा अनुभव मिला जो वो कभी भूल नहीं पाएंगे. And then especially those devotees who had very intimate association, personal association with Srila Prabhupada, always seeing his extraordinary activities kept them very inspired in Krishna consciousness. और जो श्रील प्रभुपाद के बहुत करीबी शिष्य थे, प्रभुपाद के अकल्पनीय कार्यकलापों को देख के बहुत ही आकर्षित रहते थे. And even to this day, we can see very practically that Srila Prabhupada's extraordinary power to spread Krishna consciousness is still active in this world via his books, via his disciples. और हम आज भी देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद की जो अकल्पनीय शक्ति है वह किस प्रकार से अपनी पुस्तक और उनके शिष्यों के माध्यम से अभी भी बहुत प्रभावकारी है. But those members of this Krishna consciousness movement today, which never had personal association with Srila Prabhupada, they only hear about these qualities mostly. ऐसे सदस्य संस्था के जिनने कभी श्रील प्रभुपाद का संग प्राप्त नहीं किया वह सिर्फ इन चीजों के बारे में सुनते हैं. So therefore their attraction for performing Krishna consciousness cannot solely rely on seeing Srila Prabhupada,
on participating in Srila Prabhupada's incredible activities. We just simply don't have the opportunity to do this. उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वह श्रील प्रभुपाद को देख पाए या श्रील प्रभुपाद की जो क्रियाएं हैं उनमें भाग ले पाए. I'm speaking mostly about Vani and Vapu Seva. That is, this Vapu, we simply don't have access to this at the present time. तो मैं यहाँ पे वाणी और वपु सेवा के विषय में बता रहा हूँ. जो वपु सेवा है हमारे पास उसका वो अभी नहीं है. So therefore, devotees in present day Krishna consciousness movement, they must derive their inspiration, their determination. They must derive all of these things from Srila Prabhupada's Vani. तो जो आज संस्था में भक्त हैं उन लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए जो श्रील प्रभुपाद की वाणी है उससे. Actually, everyone must rely on Srila Prabhupada's Vani, including those who had the personal Vapu association of Srila Prabhupada. सब लोगों को ही श्रील प्रभुपाद की वाणी पे निर्भर रहना चाहिए. उन भक्तों को भी जो श्रील प्रभुपाद के शुरुआती समय में साथ में थे. And Srila Prabhupada, in many cases himself, showed his personal, he gave more importance to this aspect of Vani Seva. और श्रील प्रभुपाद ने खुद भी जो वाणी सेवा है उस पे ज़्यादा बल दिया. So, and we see that practically even some devotees who had very intimate, close personal association with Srila Prabhupada, unless they actually developed this attachment for Srila Prabhupada's Vani, they never, after Prabhupada left, they were not able to maintain this standard of Krishna consciousness. और हम व्यवहारिक रूप से भी देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद के जो शिष्य थे जो वपु से जिनको प्रभुपाद की वपु सेवा में थे लेकिन वह वाणी सेवा का पालन नहीं कर पाए. तो जब श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद वह इस संस्था में नहीं थे. So many times devotees express that they feel very unfortunate that they came into this world after the disappearance of Srila Prabhupada. They were never able to have his Vapu association. बहुत बार भक्त उदास होते हैं कि वह श्रील प्रभुपाद के जगत से जाने के बाद आए, उन्हें श्रील प्रभुपाद की वपु सेवा का मौका नहीं मिला. But in some ways we can consider ourselves even more fortunate because from the very beginning of our entrance into Krishna consciousness, we must put greater importance on this aspect of Vani Seva. लेकिन हम बहुत भाग्यवान भी हैं क्योंकि हमारे शुरुआती जीवन से ही हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा बल दिया गया है श्रील प्रभुपाद की वाणी सेवा करने के. So therefore, all of the devotees in this Krishna consciousness movement must take shelter of Srila Prabhupada's Vani in the form of his books, lectures, conversations, etc. तो इसलिए सारे भक्तों को श्रील प्रभुपाद की शरण लेनी चाहिए उनकी वाणी उनके प्रवचनों के माध्यम से. Because this is actually what Srila Prabhupada came to give in this world. क्योंकि यह वही चीज है जो श्रील प्रभुपाद वास्तविक में देने आए थे. All of these big buildings and money and all of these things which are very attractive to worldly people were only meant to ultimately bring them to his Vani. तो ये बड़ी बड़ी इमारतें बड़ी बड़े बहुत ज़्यादा धन यह सब इसलिए था ताकि जो भौतिकतावादी लोग हैं उन्हें भी यहाँ पर लाया जा सके. And the Srimad Bhagavatam itself explains the great power of this Vani. और श्रीमद् भागवतम भी इस चीज के महत्व को बताती है वाणी सेवा की. The Bhagavatam itself is explaining that this Bhagavatam will create a revolution in the impious, misdirected lives of this misdirected civilization. श्रीमद् भागवतम इस चीज को बताती है कि यह श्रीमद् भागवतम क्रांति लाएगा ऐसे लोगों के जीवन में जिनके जीवन में कोई मार्गदर्शन नहीं है और बहुत ही मतलब पापमय है. And Srila Prabhupada, having very firm faith in the power of this, the teachings of Srimad Bhagavatam, ultimately, this is what he wanted to bring to the Western world, to spread this movement. और श्रील प्रभुपाद को श्रीमद् भागवतम के इन शब्दों पे बहुत ही दृढ़ श्रद्धा थी और इसीलिए श्रील प्रभुपाद उसको पाश्चात्य जगत में लेकर गए. We see that whenever Srila Prabhupada boarded the Jaladuta, he didn't come with lots of money, he didn't come with
a plan. He didn't even come with many clothes. He had just a couple changes of clothes, maybe a little bit of food. That's it. देखते हैं श्रील प्रभुपाद जब जलदूत में चढ़े थे तो श्रील प्रभुपाद के पास बहुत ज़्यादा धन नहीं था, उनके पास बहुत ज़्यादा उनके पास कोई ऐसी विधि नहीं थी जैसे वो जाके वहाँ प्रचार करेंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा वस्त्र भी नहीं थे. But what he did bring was his first canto, Srimad Bhagavatam, translation into English. लेकिन जो श्रील प्रभुपाद वहाँ पर लेकर गए वही था जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का अंग्रेजी अनुवाद था. And whenever he first set foot in America, in Boston Harbor, and he first saw the condition of the society, he wrote this song, Markine Bhagavad Dharma. तो श्रील प्रभुपाद जब बॉस्टन हार्बर में पहली बार उतरे थे और वहाँ के लोगों की उन्होंने स्थिति देखी तो श्रील प्रभुपाद ने उस समय ये भजन लिखा था, मार्किने भागवत धर्म. And in that song he prays that seeing these people, they're all completely engrossed in the lower modes of rajas and tamas. How can they possibly understand your message, Krishna? तो जब श्रील प्रभुपाद वहाँ उतरे तो उन्होंने उस भजन में लिखा कि ये जो लोग हैं यह सब रजोगुण और तमोगुण से घिरे हुए हैं, तो यह कैसे जो आपका संदेश है कृष्ण इसको समझेंगे. He prays to Krishna that it is only by your mercy, by Krishna's mercy, that such people can understand this message. वो प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण यह सिर्फ आप केवल आपकी कृपा से ही यह लोग जो हैं आपके इस संदेश को समझ पाएंगे. And he specifically explains that by this Srimad Bhagavatam, by the power of hearing Srimad Bhagavatam, this whole Western civilization can be completely revolutionized. और वह बताते हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है सिर्फ इसका संदेश सुनने माध्यम से ही जो पाश्चात्य जगत के लोग हैं वहाँ पे क्रांति आ सकती है. And within that song he quotes the very famous shloka, Shrinvatang Svakatha Krishna Punya Shravana Kirtana Hridyantasto Hyabadrani Vidhunoti Suritsatam. That by regularly hearing Nityam Bhagavata Sevaya, he quotes a couple of verses there. Regularly hearing this message of Srimad Bhagavatam, naturally, even though they are completely in the modes of ignorance, they can become purified and become devotees of the Lord. He had faith in this. तो वहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कुछ श्लोक प्रभुपाद वहाँ लिख रहे हैं और बता रहे हैं कि जो लोग रजोगुण तमोगुण में हैं सिर्फ श्रीमद् भागवतम का जो संदेश है उसको सुनने माध्यम से वो लोग उससे निकल कर भगवान के शुद्ध भक्त बन सकते हैं. And there were many of Prabhupada's other god brothers and there were many other gurus from India who came to the West with the purpose of spreading some semblance of Krishna consciousness or Vedic culture or something like this. ऐसे बहुत सारे श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई थे और बहुत सारे अलग अलग गुरु भी थे जो भारत से आए थे पाश्चात्य जगत में जो कथाकथित कृष्ण भावनामृत आंदोलन और उसके समान कुछ चीजों को का प्रचार करने आए थे. But we see that practically because of this faith in the power of the teachings of Srimad Bhagavatam and ultimately the faith of his own spiritual master who was telling him these things, this is the cause of Srila Prabhupada's success in spreading the Krishna consciousness movement in the West. तो क्योंकि श्रील प्रभुपाद की श्रीमद् भागवतम पे बहुत ही दृढ़ श्रद्धा थी और उनके जो गुरु थे जिनका आदेश था कि आप पाश्चात्य जगत में जाके प्रचार करिए, उन पर भी श्रील प्रभुपाद की बहुत दृढ़ श्रद्धा थी, उसके कारण श्रील प्रभुपाद अपने प्रचार आंदोलन में सफल हो पाए. And in order to accomplish this great task of spreading Krishna consciousness in the West, Srila Prabhupada had to tolerate so many things. और अपने इस संस्था की स्थापना करने के लिए प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद को बहुत सारी चीजों को सहन करना पड़ा. Starting from the very beginning, whenever he was staying with the Agarwals, Sally and Gopal Agarwal in Butler, Pennsylvania, Srila Prabhupada from the very beginning had to tolerate so many difficulties. शुरुआती समय से हम देखते हैं जब श्रील प्रभुपाद जो अग्रवाल परिवार है उसके साथ रहते थे तो श्रील प्रभुपाद को बहुत सारी चीजें सहन करनी पड़ी. I've had the great fortune of visiting that place in Butler, Pennsylvania. Whenever we read in Lilamrita, we think of a nice American house with a yard and a nice place, a nice big house or something like that. But they were living in a small apartment, very small. तो मुझे मौका मिला था
उस जगह को जाकर देखने का, तो हम जब सुनते हैं कि अमेरिका की एक जगह है तो हमें लगता है कि बड़ा घर होगा जहाँ बालकनी है, जहाँ बड़ा गार्डन है, लेकिन ऐसा नहीं है, वह सिर्फ एक छोटा सा घर था। And Sally Agarwal, she remembers that she always felt very bad. She felt ashamed whenever she would be cooking meat. She would think that the smell would bother Swamiji, Srila Prabhupada. तो जो सैली अग्रवाल हैं वह अपनी स्मृति में बताती हैं कि उन्हें बहुत ही बुरा लगता था जब वह मांस पकाती थी वहाँ पे, उन्हें लगता था कि इसकी जो दुर्गंध है इससे श्रील प्रभुपाद को समस्या होगी। And what to speak of all of the things that he had to tolerate whenever he shifted over to New York. और उन चीजों का तो क्या ही कहना जो श्रील प्रभुपाद को सहन करनी पड़ी जब वह न्यूयॉर्क में, Where in New York he started by staying at the place of a self-styled Mayavadi yoga guru who is exactly the type of person which Srila Prabhupada came to eliminate. तो जब प्रभुपाद न्यूयॉर्क गए तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद उनके साथ रहे जो एक मायावादी गुरु थे जो अपने हिसाब से विचार करते थे, और उन्हीं का खंडन करने के लिए श्रील प्रभुपाद अमेरिका आए थे। And then later whenever he shifted to the Lower East Side, 2nd Avenue, where it was just infested with hippies and meth monsters is what they were called, druggies. जब श्रील प्रभुपाद सेकेंड एवेन्यू में आए तो देखते हैं श्रील प्रभुपाद सारे ऐसे लोगों के साथ थे जो हिप्पीज थे, और प्रभुपाद उन्हीं के साथ वहीं पे थे। And there was even one instance of Srila Prabhupada being forced to leave the place that he was staying because of a threat that his roommate was so crazy on drugs that he would murder Srila Prabhupada. और हम देखते हैं वहाँ श्रील प्रभुपाद को एक धमकी भी मिली कि प्रभुपाद जाएं, क्योंकि जो उनके साथ में रहने वाला एक व्यक्ति था वह इतना नशे में रहता था कि उन्हें प्रभुपाद को मारने की भी धमकी दी थी। So ऐसा संदेह था कि वो उनको मार सकता है, ऐसा संदेह था कि वो उन्हें मार सकता है। this wasn't something new for Srila Prabhupada, this quality of tolerance. Since before he came to the West, Srila Prabhupada was known to be very tolerant. और यह श्रील प्रभुपाद का गुण नया नहीं था जो उनका सहन करने का था, क्योंकि प्रभुपाद न्यूयॉर्क आने से पहले भी बहुत सारी चीजें सहन करे थे। We hear that Srila Prabhupada was very unhappy with his family life at home, but still he tolerated for many, many years with the intention of bringing them up in Krishna consciousness. हम सुनते हैं कि श्रील प्रभुपाद का परिवार था वह बहुत ही ज्यादा सामंजस्य में नहीं रहता था, तो उन्हें बहुत सहन करना पड़ा उन्हें भक्ति में लाने के लिए। And even despite all of the difficulties in his family life, he was always tolerating these and still making tremendous service in the service of his spiritual master in the Gaudiya Math, writing and preaching. तब भी श्रील प्रभुपाद उन्हें सहन भी करते थे और साथ ही साथ बहुत सारी सेवाएं भी करते थे। देखते हैं हम कि जैसे गौड़िया मठ में श्रील प्रभुपाद अलग अलग पुस्तकों को लिखना और सेवा करना। And later when Srila Prabhupada left his family life, entered Vanaprastha stage, so many difficulties were there when he was trying to establish Krishna consciousness there in India. So many difficulties were there. जब श्रील प्रभुपाद ने अपने परिवार को छोड़ा, वानप्रस्थ लिया, तो प्रभुपाद बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहे थे, और फिर जब वह गुजर रहे, there was even an instance where Srila Prabhupada was staying in the ashram of one of his sannyasi godbrothers, but when he was asked to leave, he was homeless in New Delhi. और ऐसा भी हुआ कि श्रील प्रभुपाद एक बार अपने सन्यासी गुरु भाई के यहाँ पे रह रहे थे, और एक उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहा गया, और दिल्ली में उनके पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। So Srila Prabhupada was, from the very beginning, he was always willing to tolerate so many difficulties in spreading Krishna consciousness. शुरुआती समय से ही श्रील प्रभुपाद जो है वह बहुत ही वह सारी समस्याओं को झेल रहे थे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। And all of this became amplified whenever Srila Prabhupada was trying to spread this Krishna consciousness movement in the Western world, where Srila Prabhupada himself writes and explains many times that to spread Krishna consciousness in the West is something very, very difficult. और यह सब समस्याएं बहुत ज़्यादा गुना बढ़ गई थी जब प्रभुपाद अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए। श्रील प्रभुपाद बहुत सारी जगहों पर ऐसा लिखते भी हैं
कि जो पाश्चात्य जगत में प्रचार करने के लिए बहुत सारी चीजें उन्हें सहन करनी पड़ी. So we can take inspiration from Srila Prabhupada's life, seeing the way that he handled so many situations. Here we get very frustrated with just one small problem and we don't know how to deal with it. But we see Srila Prabhupada was very expert. And even though he was a pure devotee, there were still problems that came when he was trying to spread Krishna consciousness. तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए श्रील प्रभुपाद से. हम देखते हैं कि हम लोगों को अगर कोई थोड़ी सी भी समस्या आती है तो हम उससे बहुत परेशान हो जाते हैं. लेकिन हमें देखना चाहिए श्रील प्रभुपाद भले ही शुद्ध भक्त थे लेकिन तब भी बहुत सारी समस्याएं आई. And this is a common question newcomers in Krishna consciousness they like to ask if Krishna protects his devotees, then why do devotees still have problems all the time? तो ये एक बहुत ही समान प्रश्न है जो सब लोग पूछते हैं कि अगर जो भक्त हैं वह अगर कृष्ण अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तो भक्तों के जीवन में समस्या क्यों आती है. So we see in the case of Srila Prabhupada, even such a great Maha Bhagavat Nitya Siddha devotee, Srila Prabhupada, he had to tolerate so many difficulties in spreading this movement in this world. हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जो एक शुद्ध भक्त हैं जो महाभागवत हैं लेकिन उन्हें भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा इस जगत में कृष्ण भावनामृत को फैलाने के लिए. What to speak of us who are coming with so many anarthas, so much bad karma, so many bad qualities. These are just to become a devotee is difficult. What to speak of spreading the movement once you're on the platform of pure devotion? There's still difficulties. तो हमारा तो क्या ही कहना जो हम बहुत सारी आदतों के साथ बहुत सारी बुरी आदतों के साथ हम आते हैं. भक्ति करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है. उसमें इतनी सारी समस्याएं होती हैं तो हम कैसे समझेंगे कि श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त होके बहुत सारी समस्याओं ने भी सामना करना पड़ा. But by tolerating all of these difficulties and by taking shelter of Srila Prabhupada, his Vani, then we can always remain inspired in Krishna consciousness and we can ultimately experience great happiness in Krishna consciousness. तो हमें हमेशा हमें प्रेरणा लेनी चाहिए श्रील प्रभुपाद से और समस्याओं का सामना करना चाहिए और हम हमेशा प्रेरित रहें कृष्ण भावनामृत संग में. So we should make it our life's goal to please Srila Prabhupada. In whatever way we can, we should make this our purpose of life. और हमें हमारे जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए कि हमें श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करना है और किसी भी तरीके से हमें इसको अपने जीवन का उद्देश्य बनाना है. Srila Prabhupada always thought big. He always thought, how can I do the biggest and best and most amazing service for my spiritual master? श्रील प्रभुपाद हमेशा बड़ा सोचते थे. वह सोचते थे कि कैसे मैं सबसे बड़ा और सबसे अच्छी सेवा करूं मेरे गुरु की प्रसन्नता के लिए. And Srila Prabhupada was also very clearly extremely pleased by some of his disciples who performed extraordinary service. और श्रील प्रभुपाद बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी थे उनके कुछ शिष्यों से जिनने बहुत ही विशेष सेवाएं करी. So therefore, devotees should also endeavor to do great things for Srila Prabhupada and his movement. इसलिए भक्तों को श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में बड़े-बड़े कार्य करने के लिए प्रयास करना चाहिए. But at the same time, we should understand that Srila Prabhupada was not interested in collecting lots of money, building big temples, attracting many men. What he ultimately wanted is that his disciples and he wanted devotees to come to the standard of pure devotional service. कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि बड़ी-बड़ी इमारतें बनाएं, बहुत ज़्यादा धन लाएं, बहुत सारे लोगों को लाएं, लेकिन श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि जो उनके शिष्य हैं वह भगवान के शुद्ध भक्त बने. So ultimately, our service to Srila Prabhupada should be done with the intention of ourselves becoming purified so that we can perform pure service to Srila Prabhupada eternally. तो हम जो सेवा करते हैं उसकी प्रेरणा यह होना चाहिए कि हम भगवान के शुद्ध भक्त बने ताकि हम शाश्वत रूप से सेवा कर पाएं. And there are certain things which are known, which please Srila Prabhupada tremendously, like book distribution, establishing temples, establishing Varnashram farm communities, etc.
और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो श्रील प्रभुपाद को बहुत प्रसन्न करती थी, जैसे पुस्तकों का वितरण करना, मंदिरों की स्थापना करना और वर्णाश्रम की स्थापना करना। And because of this, there are unlimited different varieties of services which devotees can contribute in this movement. और इसलिए बहुत असंख्य प्रकार की सेवाएं हैं जो भक्त लोग इस आंदोलन में ले सकते हैं। But most importantly, devotees should always be endeavoring to come to the level of pure devotion, because this is what pleases Srila Prabhupada the most. लेकिन उसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्त लोग जो हैं वह शुद्ध भक्ति के स्तर पर आए, क्योंकि यह श्रील प्रभुपाद को सबसे ज्यादा प्रिय है। And whenever the devotees are pure, then the movement becomes very strong and the movement spreads, which is also very pleasing to Srila Prabhupada. जब भक्त लोग शुद्ध हैं तो जो संस्था है वह बहुत ही दृढ़ रहेगा और जो आंदोलन है वह बहुत ही अच्छे से फैलेगा। वह श्रील प्रभुपाद को सबसे ज्यादा प्रसन्न करेगा। So, like this, in the days leading up to the anniversary of Srila Prabhupada's disappearance from this world, we can increase our meditation, thinking, how is all of my activities centered around serving Srila Prabhupada? तो जैसे जैसे श्रील प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस पास आता जाएगा, हम सबको बार बार चिंतन करना चाहिए कि कैसे जो मैं क्रियाएं कर रहा हूँ वो श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए। And we can take advantage of Srila Prabhupada and his association in so many different ways, but specifically in the form of his books, his lectures, etc. तो हम श्रील प्रभुपाद के संग का बहुत प्रकार से लाभ ले सकते हैं, लेकिन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें और उनके प्रवचनों के माध्यम से। So we'll finish there. Thank you very much, and sorry if there was any, I didn't prepare anything, but if there's any questions or comments. तो हम विराम लेंगे, मुझे माफ कीजिएगा अगर कोई गलती हुई हो तो, कुछ प्रश्न हो। Yes, bro. Hare Krishna. Hare You just Krishna. mentioned that some of the disciples of the Prabhupada or his followers of his disciples are not following exactly the teachings or Srila Prabhupada's basic teachings also. So we see that some acharyas preach their teachings according to the time, place and circumstances. So some disciples say that they are doing according to the time, place and circumstances, and this is the need of the hour. So who decide that what needs to be done according to that circumstance? And in coming years also the things will change exactly what to just try to fix with us. जैसा आपने बताया कि बहुत सारे शिष्य ऐसे हैं जो प्रभुपाद ने जो शिक्षाएं दी उनका पालन नहीं कर पा रहे, तो ऐसा वो कहते हैं कि देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं और यह भी है। तो हम कैसे समझेंगे कि कौन इस चीज़ को निर्धारित कर सकता है कि क्या बदलेगा और आने वाले समय में इसका प्रभाव क्या होगा? Yes, so Srila Prabhupada is probably one of the most famous instances of an acharya who made so many adjustments for preaching Krishna consciousness in the Western world. He had to change so many things which were very taboo previously. तो श्रील प्रभुपाद बहुत ही प्रसिद्ध आचार्य हैं, इसलिए कि उन्होंने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं करी पाश्चात्य जगत में प्रचार करने के लिए। The important factor to consider is that Srila Prabhupada was making adjustments in preaching Krishna consciousness for the sake of expanding the service of his spiritual master and spreading the movement like this. तो हमें ये समझना चाहिए कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जो है अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं इसलिए कर रहे थे क्योंकि वह जो है विस्तार करना चाहते थे उनके गुरु महाराज के आदेश पे। Whereas many devotees, they try to make adjustments to the teachings of Srila Prabhupada in order to facilitate their own sense gratification. लेकिन बहुत सारे भक्त हैं वह अलग अलग चीजों को व्यवस्थित करते हैं, बदलाव करते हैं गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं, अपने खुद के इंद्रिय भोग के लिए। Now, of course, this is left largely up to interpretation by anyone who wants to interpret.
तो यह तो व्यक्ति के ऊपर है कि वह उसका किस प्रकार से मतलब ग्रहण करना चाहता है. But only an acharya is one who is able to actually interpret these things clearly, factually. लेकिन सिर्फ आचार्य ही है वह जो इस चीज का वास्तविक अर्थ समझ के बता सकते हैं. So we should always follow what is being taught by a bona fide spiritual master, and specifically a bona fide spiritual master who is coming directly from the line of Srila Prabhupada, who understands Srila Prabhupada's mood and his teachings. And like this, if we naturally follow someone like that, then we will also be correct. तो हमें उनसे समझना चाहिए जो श्रील प्रभुपाद की के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, जो एक गुरु हैं जो श्रील प्रभुपाद के मन और उनके वचनों को समझते हैं. But there should also be a hierarchy of importance that we give to Srila Prabhupada's different types of Vani. For instance, the most importance that we should give is to what he teaches in his books. ऐसा हो सकता है कि श्रील प्रभुपाद के अलग अलग आदेशों को अलग अलग तरीके से बल दिया जाए, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह शिक्षाएं हैं जो श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में दी. We might find many instances of apparent contradictions between what Srila Prabhupada writes in his books and what he practically does and what he says in letters and conversations and things like that in different times, places and circumstances. हम देख सकते हैं कि बहुत अलग अलग समय पे भेद हो सकता है जो श्रील प्रभुपाद अपनी पुस्तकों में लिखते हैं, जो प्रभुपाद अपने पत्रों में लिखते हैं और जो श्रील प्रभुपाद खुद प्रस्तुत करते हैं. But the teachings that Srila Prabhupada gave in his books are universal and eternal, and they should not be changed. But an acharya is able to understand the mood of Srila Prabhupada and make adjustments which are necessary for spreading the movement in different circumstances. और श्रील प्रभुपाद की जो दी हुई शिक्षाएं हैं वह शाश्वत हैं और हर जगह पालन की जानी चाहिए. हाँ, ऐसा है कि कुछ जो आचार्य हैं वह प्रचार के लिए कुछ व्यवस्थाएं कर सकते हैं. There's another question. वो सेवा केवल शरीर की होती है या भगवान विग्रह की भी प्रभुपाद की? The Vapu Seva is only of the body of Srila Prabhupada or of the deities of Prabhupada also. It is also considered to be in the realm of Vapu Seva. हाँ, इसको भी Vapu Seva कहेंगे. But the principle which Srila Prabhupada himself and which Shastra supports is that we should give most importance to Vani Seva. तो जो शास्त्र तथ्य प्रकाशित करते हैं वह यह है कि हमें वाणी सेवा पे ज़्यादा बल देना चाहिए. Both are important, but Srila Prabhupada also himself gave more importance to Vani. दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद खुद भी वाणी सेवा पे ज़्यादा बल देते हैं. Prabhu, as you mentioned this, by seeing pure devotees, people can become purified, and it happened in the case of Prabhupada also. But on the other side, we see Prabhupada met a lot of people, and he wanted to make everyone devotee, but not everyone became a devotee. So how to understand this? तो प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि शुद्ध भक्त को देखने से ही वह लोग बन जाते थे, तो हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद सबको शुद्ध भक्त बनाना चाहते थे, लेकिन सब नहीं बन पाए. Yeah, we see that it seems like Srila Prabhupada was not able to make certain people into devotees. तो ऐसा दिख सकता है कि श्रील प्रभुपाद कुछ लोगों को भक्त नहीं बना पाए. But as it is explained in Chaitanya Charitamrita, that just by one very small moment of association with a pure devotee of the Lord, then perfection is achieved. लेकिन हम देखते हैं जैसा चैतन्य चरितामृत में बताया है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनका एक बहुत ही क्षण मात्र के संग से भी पूर्णता प्राप्त होती है. So anyone and everyone who had the great fortune of associating with Srila Prabhupada in any way, seeing his Vapu, hearing his Vani, they ultimately will achieve the highest perfection. They will become pure devotees, no doubt. तो जिन भी लोग किसी भी तरीके से प्रभुपाद की वाणी सेवा में थे, वो लोग पूर्णता को प्राप्त करेंगे, भगवान की शुद्ध भक्त बनेंगे.
Of course, there are those who are also offensive to pure devotees, and they never actually are able to associate with the pure devotees, so they won't actually get their mercy like that. बहुत सारे लोग भी हैं जो अपराध करते हैं, तो इस कारण से वह उस चीज को नहीं प्राप्त कर पाएंगे. But Srila Prabhupada always assured devotees that just by engaging someone in just a small amount of service, they give some donation, they take prasad, they see the Rath Yatra or something like that, even if they don't become a devotee in this life, then in the future, in next life, then they will start from their level of advancement and they will keep making advancement. प्रभुपाद कहते थे छोटी सी सेवा करने पे भी, जिस प्रकार से कुछ दान देना या कुछ भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, रथ यात्रा का दर्शन करना, तो हो सकता है कि वो तुरंत शुद्ध भक्त ना बने, लेकिन वह क्रमिक रूप से भक्ति में प्रगति करेंगे उनके स्तर के अनुसार. I actually have practical experience of meeting old people in America who went their whole life, as teenagers, they heard about Krishna consciousness. Some of them even saw Srila Prabhupada, some of them had prasad, things like this. But they went their whole life without becoming devotees. And then when they're just an old man or an old woman, they meet us on the street and they think, oh, I remember you. And then they give some donation and they buy a book. So like this, because they appreciated devotees in the past, they make advancement in the future. तो मुझे स्मरण है कि हम लोग अमेरिका में कुछ वृद्ध लोगों से मिलते थे, तो वह बताते थे कि वह उनने अपने समय पे श्रील प्रभुपाद के किन्हीं ने दर्शन किए थे, किन्हीं ने कभी प्रसाद लिया था. उन सब लोगों ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन के बारे में सुना था, किसी न किसी प्रकार से संपर्क में आए थे. हालांकि वह शुद्ध भक्त नहीं बने, लेकिन किसी न किसी तरीके से संपर्क में आए थे. और आज जब हम जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो वह हमें कुछ दान देते हैं, हमसे पुस्तक लेते हैं, और उस चीज़ का वो उनको अभी भी स्मरण है. Any other questions? Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Srila Prabhupada was not interested in collection of more money or building big temples, but wanted to make his disciples or see his disciples becoming a pure devotee only. This was it. Besides that, they were Prabhupada used to wish that he used to feel happy when disciples distribute books and temple establishment and one ashram were some of his wish. So, in Srila Prabhupada Nilamit, there is a mention where Srila Prabhupada also wanted during, as you said, his visit to when he was told to leave the one of his god brother's home, and he was all alone at that time. And somewhere it's mentioned that he also wanted that in present day democracy parliamentary system, where he wanted to see the so-called this present member of parliaments to be a Brahmins and wear a tilak on forehead and like that. But this democracy do not support Varnashram. So how can we understand this point from Leelamrit? He wanted to see Brahmins joining the parliament and wearing the tilak and dhotis like that. You're asking how? Yeah. Because this democratic system is not according to Varnashram. Yes, yes. आपने बताया कि अलग-अलग चीजें थी जो बहुत ही प्रसन्न करती थी, जैसे आपने बताया पुस्तक वितरण, मंदिर बनाना और वर्णाश्रम की स्थापना करना. लेकिन हम देखते हैं कि आज के समय में जिस तरीके से जो डेमोक्रेसी है, वह तो वर्णाश्रम को सपोर्ट नहीं करती. और प्रभुपाद बताते थे कि जो पार्लियामेंट है, वहाँ पर भक्त लोग तिलक लगाकर जाएं, तो उसको कैसे समझेंगे?
So it's very clear that Srila Prabhupada wanted to establish genuine, traditional Vedic culture according to Varna and Ashram. That's very clear in his teachings. तो यह चीज बहुत स्पष्ट है कि श्रील प्रभुपाद जो है वैदिक समय के अनुसार वर्ण और आश्रम की स्थापना करना चाहते थे. But we also see that Prabhupada realistically understood that it wouldn't be possible to implement all aspects of Varnashram, nor would it happen overnight. It would be a very gradual process. लेकिन श्रील प्रभुपाद इस चीज को भी समझते थे कि हर जगह पर हम वर्णाश्रम की स्थापना नहीं कर पाएंगे और यह एक रात में नहीं होने वाला है, उसमें समय लगेगा. So therefore, following the teachings of Srila Rupa Goswami, of the Yukta Vairagya, Srila Prabhupada wanted to serve Krishna with what was readily available at that time. तो श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिया हुआ युक्त वैराग्य का प्रभुपाद इस्तेमाल कर रहे थे, जो भी उपलब्ध है उसे भगवान की सेवा में नियोजित करें. So therefore, even in this modern demoniac democratic government system, Srila Prabhupada wanted to somehow or other engage that in the service of Krishna. तो हम देखते हैं जो आधुनिक आसुरिक जो सिस्टम है उसका श्रील प्रभुपाद इस्तेमाल करना चाहते थे कृष्ण की सेवा में लगाने के. Although Srila Prabhupada was not in support of this modern government system in general, there are certain statements of Srila Prabhupada which Srila Prabhupada seemed to favor the democratic system, because that means that the majority of the people can decide what are the laws of the nation. लेकिन हम श्रील प्रभुपाद बहुत सारी जगहों पर जो आधुनिक सरकारी व्यवस्था है उसके समर्थन में नहीं थे, लेकिन कहीं-कहीं हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद उनकी कुछ चीजों के समर्थन में भी थे. And he saw systems like communistic systems like in the USSR at that time as being a great threat to the Krishna consciousness movement, whereas the democratic system like in America is very good because the people can ultimately make the decisions, and if we make everyone Krishna conscious, then the government will naturally also become Krishna conscious. एक उदाहरण है कि जो कम्युनिस्ट सिस्टम था यूएसएसआर, प्रभुपाद उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं थे, लेकिन जैसा अमेरिका में सिस्टम है उसके अनुसार जो जनता है वह निर्धारित कर सकती है कि क्या किस प्रकार के नियम बनेंगे. तो अगर हम जनता को कृष्ण भावना भावित बनाएंगे तो अपने आप ही सारी व्यवस्था बन जाएगी. And he also instructed some of his disciples, a very few number of his disciples, to directly participate in political activities in the service of Krishna. और श्रील प्रभुपाद ने अपने निर्देश भी दिए अपने कुछ शिष्यों को कि वो जो है राजनीति में भाग लें. For instance, in Atlanta, where I'm currently living, there was one devotee who ran for mayor several times, and Srila Prabhupada was very pleased that he was doing like that. He ran for mayor. How do you say it like that? तो जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ अटलांटा में, वहाँ पे बहुत कुछ एक भक्त ऐसे हैं जो मेयर की इलेक्शन के लिए खड़े हुए, तो श्रील प्रभुपाद उससे बहुत ही प्रसन्न थे. And Srila Prabhupada said that the most valuable fruit of this, of devotees participating in politics, is that we can promote our books and we can distribute more of our books. And what is Srila Prabhupada teaching in his books? He's teaching the principles of Varnashram and everything like that. So there's immediate service, which can be done in worldly politics, and then there's long-term vision which Srila Prabhupada had for the way that society should be run. तो इसका एक परिप्रेक्ष्य है श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस स्तर पे है तो बहुत महत्वपूर्ण सेवा जो वो कर सकता है वह है कि पुस्तकों का प्रचार करके, क्योंकि अगर इस तरीके से वह पुस्तकों का प्रचार करेगा, बहुत सारे लोग पुस्तक पढ़ेंगे, तो वह समझ पाएंगे कि जो लंबे समय में व्यवस्था है वह वर्णाश्रम की व्यवस्था है. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada's transcendental book distribution ki jai. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo.